Good morning. Good morning. ऐसा क्या जादू चलाया सुंदर पिचई ने गूगल के लिए, जिनकी वजह से गूगल ने एक प्रोडक्शन मैनेजर को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ बनाया। तमिलनाडु के मदुराई से अमेरिका के कैलिफोर्निया तक का यह सफ़र अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। गूगल ने इतना ही नहीं, हर साल प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें 370 करोड़ रुपए के स्टॉक्स देंगे और साथ में उन्होंने सुंदर पिचई को वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी एम्प्लॉय बनाया। पिचई सुंदरराजन, जिन्हें हम सुंदर पिचई के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 1972 में मदुराई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिता रघुनाथ पिचई जीसी नामक कंपनी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माता लक्ष्मी स्टेनोग्राफर थी। सुंदर पिचई शुरुआत से ही एक होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की थी और उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्कॉलरशिप हासिल की और अपनी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री यानी कि एमएस कंप्लीट किया। बाद में उन्होंने वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एमबीए किया। सुंदर पिचई ने गूगल तो 2004 में ज्वाइन किया। उसके पहले उन्होंने अप्लाइड मटेरियल कंपनी में एज एन इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर के पोस्ट पे काम किया। उसके बाद मैकिन्सी जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, वहाँ एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट की पोस्ट पर उन्होंने काम किया। उसी साल 2002 में सुंदर पिचई ने अपनी आईआईटी की बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी की और अब उनका गूगल का सफ़र शुरू होता है। ईयर 2004 में उन्होंने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर गूगल ज्वाइन किया, जहां उन्हें गूगल टूलबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया गया। यह प्रोजेक्ट गूगल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, क्योंकि गूगल टूलबार की मदद से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था, लेकिन इसके लिए गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डिपेंड रहना पड़ता था। बस यही बात सुंदर पिचई ने उस वक्त के सीईओ और को फाउंडर एरिक स्मिथ एंड लेरी पेज से बात की और सजेस्ट किया कि गूगल का अपना वेब ब्राउज़र मतलब अपना ओन सर्च इंजन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने सुंदर पिचई की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पर एग्जिस्ट करता है और अगर हम अपना नया ब्राउज़र बनाते हैं तो उससे कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। इट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी फॉर अस। 2006 अक्टूबर 18 इंटरनेट एक्सप्लोरर ने जैसे ही गूगल को हटाकर बिंग को अपना डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र बनाया, परिणाम गूगल ने उसी रात अपने 300 मिलियन कस्टमर्स खो दिए। लेकिन जैसे ही पिचई का गूगल टूलबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जिससे टूलबार यूज़ करके गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाया जा सकते था, परिणाम लॉस्ट 80% कस्टमर्स गूगल को रिटर्न मिले और यह एक पहला गिफ्ट सुंदर पिचई से गूगल को मिला। पिचई की इंटेलिजेंसी देख एरिक स्मिथ और लैरी पेज ने पिचई से कहा कंपनी के लिए कंपनी का अपना ओन ब्राउज़र वो डेवलप करे और जन्म हुआ गूगल क्रोम का। बेटर इंटरफेस, इजी एक्सेसिबल, इनफ मेमोरी के चलते गूगल क्रोम
वर्ल्ड्स मोस्ट यूज ब्राउज़र बहुत जल्द ही बन गया। लेकिन पिचई को रिटर्न गिफ्ट गूगल से क्या मिला? तो पिचई को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बना दिया गया। अभी इससे भी बड़ा रिटर्न गिफ्ट सुंदर पिचई के लिए गूगल से बाकी है। ईयर 2013 एंड्रॉयड के क्रिएटर एंडी रूबिन ने गूगल को छोड़ दिया। नेचुरली एंड्रॉयड सेक्शन की बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त के सबसे काबिल और होनहार एम्प्लॉय सुंदर पिचई को सौंपी गई। मैजिक अभी बाकी है। सुंदर पिचई ने क्या किया? एक बहुत अच्छा आइडिया लगाया और गूगल को एंड्रॉयड के साथ इंटीग्रेट किया, जिससे जब जब भी हम एंड्रॉयड मोबाइल खरीदते हैं तो गूगल के सभी ऐप्स जैसे गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, गूगल मैप, गूगल मीट, गूगल कैलेंडर सभी ऐप मोबाइल में हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जिससे गूगल का कस्टमर रिवोल्यूशनरी तरीके से बढ़ गया। जाहिर सी बात है, अब गूगल सुंदर पिचई को क्या रिटर्न गिफ्ट देगा? तो वह गिफ्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट। और इस तरह से सुंदर पिचई ने गूगल के प्रोडक्शन मैनेजर से गूगल के सीईओ तक का सफ़र तय किया। है ना इंस्पिरेशनल? प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। ईयर 2019 सुंदर पिचई को गूगल की पेरेंट्स कंपनी अल्फ़ाबेट के भी सीईओ बना दिए गए। फ्रेंड्स, यह जीवन कहानी हमें क्या मॉरल देती है, हमें क्या प्रेरणा देती है? अगर व्यक्ति मन लगाकर और मेहनत करने का जोश हो तो आसमान की ऊंचाई भी छूना बिल्कुल आसान है, आसान है, आसान है। दोस्तों, वीडियो के अंत में खुद सुंदर पिचई के इंटरव्यू का एक छोटा सा वीडियो टैग किया हुआ है, उन्हीं के मुंह से उसे जरूर सुनिए। Let me tell you a little bit about my personal journey to Silicon Valley from India 22 years ago. Growing up in India, like many of you, I got my first telephone when I was 12. In my case, it turned out to be a rotary phone, so it wasn't that great for selfies, but I still loved to call my friends, play with it, and sometimes take it apart. That telephone cemented my fascination with technology. I remember in my parents' house in Chennai, reading about the invention of the transistor at Bell Labs. Of course, that initial invention helped found what became known as Silicon Valley, and out of that came companies like Fairchild Semiconductor and Intel and all the computers and software that we all use today. You can draw a direct line from that invention to the technology that powers your Twitter feed or your WeChat messages today. I remember reading about that and thinking, it's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash other entrepreneurs to revolutionize industries in ways you could never predict. The people who build the transistor in many ways enable the entrepreneurs who are using incredible processing power to analyze data and diagnose cancer. In the same way, the invention of smartphones and GPS has enabled other companies to build apps that revolutionize the way we travel around cities. That's why I came here. I had a deep desire to be part of this exchange of ideas, this community of entrepreneurs. And coming to the global hub where this was all happening, at Stanford, I felt welcomed and embraced. People didn't care where I came from, only my ideas and hard work mattered. I'm not alone. The Valley attracts people from all over the world. That is why you're here. I'm excited that over 700 entrepreneurs from over 170 countries are joining us here today. The possibility that anyone with the right idea at the right time can have an impact on others, that is no longer limited to a single place. It's possible everywhere. What we are seeing now is an unprecedented global opportunity. In China, a few months ago, I met entrepreneurs combining social, commerce, and business platforms
in entirely new and unique ways. And earlier, I mentioned a game built by an entrepreneur from Vietnam. When I was last in Vietnam, I met him. His name is Dong Nguyen, and he created Flappy Bird. He was a developer from Hanoi who wanted to create simple games, non-violent games, that reminded him of why he fell in love with gaming in the first place. And it quickly became one of the world's most downloaded games for Android and iPhones. Great ideas in technology no longer come from just Silicon Valley. They can and do come from anywhere. And now they can quickly reach scale. I see hubs growing all over the world: Germany, Brazil, UK, Israel, China. The latest figures say that 21% of adults across 60 countries intend to start a business in the next 3 years. And there are over 200 million women around the world who are starting or running a business. It's clear that Silicon Valley is now as much an idea as a place, and it is an ideal of what's possible. And those of us who are lucky enough to have benefited from being in Silicon Valley or hubs like it owe it to the world to set a good example and clear a path for others. And that is another reason I'm excited to be here speaking to you. Because businesses, academia, and governments all play an important role in removing these barriers. The internet itself is a perfect example of this. It's arguably the greatest economic engine of all time. And its success is largely a result of early collaboration between the US government, the private sector, and researchers from academic institutions, including Stanford. They worked together and made deliberate policy choices to keep the platform open and borderless. The course of history shows that this open model can unleash innovation, opportunity, and benefits for people everywhere. In India, another early and insightful decision was to create the Indian Institutes of Technology. These are leading engineering and technical institutions that are government supported. I still vividly remember as a teenager jumping onto a crowded train at Chennai and traveling for 24 hours to attend my school at IIT Kharagpur. And that opportunity changed the course of my life. These institutions, over many decades, have played a huge role in creating generations of skilled entrepreneurs in India. There are many countries helping to create positive environment for their entrepreneurs. In the US, recently the Departments of State and Commerce appointed digital economy officers who will work to remove barriers and help entrepreneurs reach communities around the world. At Google, we are committed to playing our part to foster the next generation of entrepreneurs. Our Google for Entrepreneurs team has established a number of campuses. These provide space for entrepreneurs to build and work together in major tech hubs to take their ideas and go global. We have opened campuses in London, Madrid, Sao Paulo, Seoul, Tel Aviv, and we look forward to reaching new cities in the future and perhaps welcoming some of you to drop by. Google tools help businesses launch and grow every day. More than 30 million small businesses globally rely on at least one Google product to find customers, to grow, and to be productive. Training. We are also committed to train 5.5 million people on digital skills, investing over $140 million during the past year. In the next year, we aim to provide free digital skills training to 1 million young people in Africa alone. I know how much hard work it takes to pursue a dream of building a business. The long hours, time away from family, the rejection, the ideas you know are brilliant that just don't seem to catch on. There is a great quote from Thomas Edison that does the best job of defining what it's like to be an entrepreneur. I have not failed, I have just found 10,000 ways that don't work. Everyone here is part of a tradition that stretches all the way back to Edison and up to companies like Google today. It's about more than building apps to make money. It's about transforming industries, creating millions of jobs, curing diseases, fighting global warming, and making our schools richer environments for our children. So I hope you enjoy your time here in Silicon Valley, and I hope you find the summit invigorating
and that when you get home, it encourages you to continue building. We're all looking to you. The world is counting on you, and we can't wait to see what you build next. Thank you.